नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का आज के फ्रेश एडिशन में और कोटक के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। कल की मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिजाइन टुमारोज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी and for that we need some tools. We need to understand that what has exactly happened during the day. That is something which is really important. And if we consider today's news flow, then based on that, we can say that there was like something related to geopolitical tensions which has actually triggered some more weakness during the day. The level of 25,000 was something like a rock solid support for the market, but still the market failed to hold around those levels, and we saw eventually the market falling to the levels of 24,800, 850. आज निफ्टी की वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी भी थी, और ऐसे केस में क्या होता है कि मार्केट में थोड़ा सा बर्डन भी बढ़ता ही है। तो अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो मार्केट में क्या होता है कि लिक्विडेशन और बढ़ जाता है। और इसी वजह से हमने कल आपको अलर्ट किया था कि 25,000 के लेवल्स अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आपको इस मार्केट में काफी केयरफुल रहना है। बट यस, एट द सेम टाइम अगर मार्केट इन लेवल्स को तोड़ता है तो आपको 24,850 पे कॉन्ट्रा ट्रेड भी लेना है। करेक्ट। और आज हमने देखा कि मार्केट 24,850 के करीब आने के बाद वहां से कुछ और 20-25 पॉइंट का डेफिनेटली हमने करेक्शन देखा। 24,820, 825 के लेवल्स को हमने निफ्टी को छूते हुए देखा हमने, और उसके बाद जो रिकवरी बनी वो 24,920, 25 तक की थी। तो देखिए, इंट्राडे के लिए हमेशा हमें ये 50, 60, 70, 80 पॉइंट्स बहुत जरूरी होते हैं। इन्हें हमें कौन से लेवल्स पे जाके कैप्चर करना है, वो एक सबसे बड़ा स्किल होता है, और उसी स्किल को हमें डेवलप करना है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, तभी मुमकिन है जब आप आपकी निफ्टी स्ट्रेटेजी एक दिन पहले बनाने की कोशिश करेंगे। सो दैट क्या होता है कि ड्यूरिंग द डे, जैसे मैंने लास्ट वीक में भी यही कहा था और कल भी मैंने यही कहा था कि रीजंस बनते रहते हैं, और ऐसे रीजन जब बनते हैं तब हमें क्या होता है कि मुश्किल हो जाता है टू कम ऑन एनी स्पेसिफिक सॉल्यूशन कि मैं एग्जैक्टली क्या करूं उस वक्त, and then it becomes very difficult. So whenever there are like some external factors, and then that those factors start increasing pressure or building pressure on us, that times it becomes very difficult to take any specific decision in the market. But if you are like ready with your strategy, then you can always take strategy in this market. Okay, so today we observe this, and I'm sure that we are going to observe this several times in next several months and years. I have spent nearly 20 years in this market, and I observed such type of phenomena almost on a regular basis. So, and that's the reason I always ask my viewers to come on any specific decision or strategy before entering into the market. Then only you can make or you can maximize your returns. So, guys, let's move on the chart, because that is something which is really important for us to understand, and that can give you some more understanding about what has exactly happened in this market. So you can see here it's a chart of Nifty on 15 minutes time scale, and you can see here the market has started its rally from 24,500, took a multiple times support close to 24,500. The lowest low was 24,000, 23,950. Okay, from there the market started its up move. It went to 25,000. It started taking support around 24,500. Eventually, we saw the breakout yesterday, but the follow through buying was completely missing. Despite the market has broken the level of 25,200, it failed to sustain about those levels. In fact, the market has formed doji formation at the top of the rally on which we discussed. Today, because of this doji and
news flow, we saw the market falling to the levels of 25,000, where it has spent some time, but gradually it started falling below the same. Also, news supported to the overall sell off, and we saw the market dropping to 24,820. Now, what should be the strategy for tomorrow? The strategy for tomorrow is very simple. That in case if we see the market is crossing the level of today's intraday highest, which was around 24,920, if it crosses this particular level in tomorrow's trading session at the beginning, then in that case, you should look for taking a long bet in this market with a stop loss at 24,800. We cannot keep a stop loss at 24,750. It is too far. Okay, but if it crosses this level, then there you should look for taking a long bet in this market with a stop loss at 24,800 on intraday basis. If it breaks that, we don't have any choice but to exit out of long positions. In case market breaks this particular support level, then in that case you may look for creating some short positions, and the market in that case may fall back to the levels of 24,650, which is very nearby the next level, and in the worst case scenario 24,500. My view is that if you want to create any particular short strategy in tomorrow's trading session, and because the market is like uh, on the verge of this particular trend line, then in that case you can go short below 24,700. But for that, you need to keep a stop loss of 24,750, just a 50 points. Why? Because very first target for the Nifty is at 24,650. But in case Nifty fails to sustain around those 650 levels, then in that case, the Nifty may even fall to 24,500. So the risk reward ratio is favorable only if it breaks the levels of 24,650. But then it will be too late to enter into the strategy. So I'm very much clear that what should be the strategy. Now we'll move to the Bank Nifty, and Bank Nifty you can see here we saw a steep decline, and it was down throughout the day. In fact, it failed to recover from the lows, but yes, it was very close to the polarity level, which was around 56,100, 56,200, and 56,000. So between these levels, red particular arrow is indicating us that this particular market is now around this polarity level. And tomorrow, in case Bank Nifty break this level, then we may even see the levels of 55,400. तो ऐसे केस में हम बैंक निफ्टी को 54,000, sorry, I'm very sorry, 55,500 या 400 तक निफ्टी को करेक्शन में आते हुए देख सकते हैं. तो बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है. कल अगर 56,000 के नीचे रहा तो हम और करेक्शन देखेंगे. अगर इन लेवल से कोई रिवर्सल पैटर्न अगर बनता है, कोई बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन अगर बनता है, तो उस वक्त हम डेफिनेटली कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाने की कोशिश करेंगे. बट हमें उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को बनने देना जरूरी है. लेट इट फॉर्म ऑन द 60 मिनट्स चार्ट्स. उसके बाद आप उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन का लोवेस्ट पॉइंट एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करके लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हो. सो दोस्तों, ये रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी. आज हमने देखा कि निफ्टी आईटी में भी कुछ वीकनेस था, बट ये निफ्टी आईटी के वीकनेस का सबसे बड़ा रीजन यही था कि शायद थोड़े से यूएस फ्यूचर्स नाराज थे. हमने वहां पे कुछ वीकनेस देखा, और जब भी यूएस में हमने देखा है कि कुछ वीकनेस आता है, तब हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि नैस्डैक डाउन होता है, हमारे आईटी स्टॉक्स में प्रेशर बनता है. लेकिन ये जो निफ्टी आईटी का जो चार्ट है वो हमें कुछ इंडिकेट कर रहा है. हमें लगता है कि शायद इसमें कोई कंसोलिडेशन हो रहा है. मे बी इट्स अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, ये भी हो सकता है, मुझे नहीं पता. लेकिन अभी इसे एडवांस में गेस करना मुझे लगता है बहुत ही रिस्की है. तो लेट इट बी, एक बार इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को बनने दीजिए. उसके बाद आप इस पर्टिकुलर, और बनने देने का मतलब ये है कि लेट इट क्रॉस द लेवल ऑफ नेक लाइन. और आपको पता होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कभी भी सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखने की बात होती है वो होती है नेक लाइन रेजिस्टेंस. और ये नेक लाइन रेजिस्टेंस जब ये पर्टिकुलर इंडेक्स क्रॉस करेगा तभी आप इसमें पोजीशंस बना सकते हैं.
अब देखिए आज हम उन्हीं लेवल्स के करीब क्लोज हुए हैं. Tomorrow, in case if we see the Nifty IT is crossing this level, then in that case we need to be aggressive. So what should be the strategy? Today's highest level that was around 38,900. So tomorrow, in case if this particular, I'm to say, Nifty IT index crosses 38,900, then in that case, you may very first look for adding some stocks. Later on, if you see there is a broad-based participation, then you may even look for taking some more bets on few more stocks from the IT. So tomorrow's day, maybe IT index will decide. That's my view. So we need to focus on IT stocks. In that, we like Infosys, we like even TCS. Take Mahindra should also be on the watch list along with Persistent. So these are the four stocks on which we will focus. But broadly, Nifty IT index should be on the watch list. That's all from my side. Thank you very much for listening me, keeping patience, watching this video. Don't forget to subscribe our channel so that you will not miss any update. Thank you so much and have a lovely evening to all of you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.